जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आरती के दर्शन कर लीजिए। आज का ये सत्संग अबू धाबी गुरु परिवार द्वारा सैटरडे का वीकली सत्संग है। गुरु जी के साथ हम उनकी सारी संगत का वेलकम करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आरती के दर्शन आज हमारे बीच में सत्संग शेयर करने के लिए सत्संग अबू धाबी गुरु परिवार ज्योति आंटी हैं, जो अपनी ब्लेसफुल जर्नी डिवाइन जर्नी गुरु जी के साथ है हम लोग के साथ शेयर करेंगी। तो जितनी भी संगत ऑनलाइन है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं जाइएगा नहीं और सत्संग सुनिए, क्योंकि सुनने से और सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। आज अष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों की अष्टमी है आज। और ज्यादा समय न लेते हुए हम ज्योति आंटी को इनवाइट करेंगे कि वो अपना सत्संग स्टार्ट कर सकती हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। I think just give me a signal to confirm that I'm audible, please. Yes, sir. You are audible. Thank you. Jai Guru Ji, Sangat Ji. Jai Guru Ji. This is such a divine moment for me that Guru Ji has blessed me to share my journey with Guru Ji on this wonderful platform. I have been longing since long. This urge was so strong in me to be there on this platform and to speak whatever, because when I used to listen to satsangs, मेरा बहुत मन करता था कि स्पेशली इस डिवाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कुछ बोल पाऊं, because I don't know why and how I got so connected with Ayush uncle. I have not met him in person even once, but I've been listening to the satsang and I've been following his links that he has been sending to me, and there's a kind of warm affection that drives me so deeply towards Guruji's satsang, to all the Sangat Parivar who's there in UAE and especially Abu Dhabi. So it's a very warm and deep gratitude from my side. Thank you so much, Akash uncle, for giving me this platform. Ayush uncle for giving me this platform. And of course, कहाँ से शुरू करूं और गुरु जी के बारे में क्या क्या शेयर करूं। मैंने सत्संग में सुना है और मैंने महसूस भी किया है कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला गुरु जी करते हैं और सत्संग सुनने वाले का भी भला गुरु जी करते हैं। तो मैं तो ब्लेस हो गई हूँ। आई एम ड्रेंच्ड एंड आई एम सोक्ड विद ऑल द ब्लेसिंग्स। शुक्राना मेरे मालिक का। बट ऑफ कोर्स जो मैं आपसे शेयर करने जाऊंगी, पता नहीं गुरुजी मुझसे क्या बुलवाएंगे, लेकिन किसी ना किसी संगत जी को कोई ना कोई मैसेज तो ऑफ कोर्स मिलेगा। गुरुजी ने बहुत खूबसूरत सी एक बात कही है, विच इज बिन बोलियां सब कुछ जानता। वो परमात्मा हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं संगत जी। हम जब अपनी परेशानियों में डूबे होते हैं ना, तो हम बहुत नाशुक्रे हो जाते हैं। हम हर चीज के अंदर बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बड़े रिग्रेटफुल फीलिंग को लेके चलते हैं। और हम सब जानते हैं, यू नो, दिस इज टू बी रियटरेटेड, दिस इज टू बी रिमाइंडेड एंड रिवाइज्ड, आई थिंक मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ, दैट वो अनग्रेटफुल एटीट्यूड रखना, वो नाशुक्रा मोड पर अपने आप को रखना इज नॉट राइट। यू नो, वो परमात्मा जिसने आपको जिंदगी दी है, जिसने आपको ब्लेस करा है, वो कैसे आपकी परेशानियों को नहीं समझेंगे और कैसे आपकी परेशानियों को नहीं सॉल्व करेंगे। पर सिर्फ जब हमें परेशानियां हो तभी हम परमात्मा का ध्यान करें, ये तो सही बात नहीं है ना। परमात्मा को हम अपनी खुशियों में क्यों भूल जाते हैं? परमात्मा को हम इतना, जब हम हैप्पी होते हैं, यू नो, व्हेन वी आर जस्ट फ्लाइंग एंड ब्लूमिंग, then why do we not be into that great gratitude mode, or you know, at least हम अपने आप एक थैंक यू सिंपल सा छोटा सा एंड यू नो वो एक्सप्रेस कर हम
हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड आई लव यू फॉर गिविंग ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स अराउंड मी. And I feel it that my journey has been so beautiful because मैंने जो सत्संग सुने हैं, मैंने mostly सत्संग सुने हैं जहां पर medical problems रही हैं, you know, the physical ailments in people, and as severe as something like cancer. Guruji bless all of us. Each one of our health should be blessed with with all happiness and कुछ भी गलत किसी के साथ ना हो. But जब मेडिकल साइंसेस को गुरुजी ने फेल किया, विश्वास जगाया कि अपने कर्म को हमने काटना है. 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते तो 10% तो हम काटेंगे ही ना. पर हमें कम से कम उस परमात्मा का शुक्रिया तो कहना आना चाहिए ना. माय सत्संग टुडे इज मोर ऑफ the shukranas that has happened in my life, which I really want to be very, very vocal about it, very, very loud about it, and of course to, you know, remind and re-remind and re-revise and reiterate people that the world is really, really beautiful. We fail to see the beauty around it. We are running after, I don't know what kind of bait. We are running after, I don't know what kind of a competition, you know, that herd mentality of big garis and big bungalows and all materialistic things around us. No, my dear friends, life is much beyond that. हमें सबको पता है, पर हम फिर भी भूल जाते हैं रास्ते में चलते चलते, और गुरुजी वही तो याद दिलाते हैं. तो मेरी जर्नी के अंदर फिजिकल एलिमेंट्स शायद कम आई, ऑफ कोर्स आई, सर्जरीज मल्टीपल, बट मेंटल problems. So when I say problems, I want to make people understand that when you talk about, oh, I'm in a depression, or I'm taking antidepressant tablet, you know, I'm taking the medicines to suppress my emotions, etc. There's so much in medical science which we can't challenge. My dear friends, I want to share my journey with Guruji, stating that Guruji ने जो हाथ पकड़ा है, तो वो इतना खूबसूरत सा गुरुजी का एक शब्द है, which is like you know, गुरुजी मैं तेरी पतंग, अपनी मेरी डोर को अपने हाथ में रखना, क्योंकि अगर आपने वो डोर छोड़ दी तो ये पतंग कट जाएगी. वो इतनी ब्यूटिफुली गाया गया है. I'm not a good singer, so I can't actually sing the song. And of course Puneet Malhotra uncle's song where he says Jayesh Kar. Actually the beauty of life is that only. हमें जो सर्कमस्टांसेस मिले हैं, जैसी सिचुएशंस मिली हैं, हम उसमें पॉजिटिव होके स्माइल करके, एंड वी शुड बी लाइक ब्रिंग इट ऑन, यू नो, लाइक आई एम रेडी टू फेस because my Guruji is there with me. And when Guruji is there, nothing wrong will happen. It is just a matter of time. So if I talk about the depressions, you know, going to the doctor, taking the medicines, sulking, and, you know, criticizing people, and criticizing everything around you, plus criticizing the Almighty, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Why are you trying me? You know, why are you being so unkind and unfair to me? I think मैंने journey बड़ी अलग तरीके से शुरू करी, because since the beginning, if I remember, however I remember, I've been an ardent devotee of Lord Shiva. And I used to get the solace, you know, I used to sit and just look at the statue, because पहले तो मूर्तियां ही होती है ना हमारे मंदिर में जो हम रखते हैं, और पता नहीं मैं उनसे कितनी बातें करती थी, पर इतना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट रहा शुरू से भोलेनाथ के ऊपर कि बस लगता है कि, और लगता था कि मैंने इनसे कुछ भी अरदास करी है वो पूरी हो जाएगी. आज भी पूरी होती है. पर संगत जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी नहीं है वो हमारे समय पर हो. जब हम जिद में आते हैं ना, तो परमात्मा कहता है जिद कर रहे हो ना, ले लो. आपको नहीं पता कि आपके आगे आने वाला टाइम कैसा है. और गुरुजी भी एग्जैक्टली यही बात कहते थे, समय मेरा होगा, अरदास तेरी है, पूरी कैसे नहीं होएगी. तो वो ट्रस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ आई कम टू माई सेल्फ, I was going through lots and lots and lots of emotional turmoil in my life, which, being an educator myself, being a trainer myself, being a very positive person myself, शायद मेरे हाथ से मेरी जिंदगी की डोरी छूटती जा रही.
I became very cranky. I became, I used to cry a lot, and I used to be very, very sad is a very simple word, to look around and just feel, why am I feeling so sad? I don't know, but I was feeling sad. And when I was introduced to Bade Mandir in 2018, 2019 precisely, just a visit, मुझे कुछ नहीं पता था बड़े मंदिर के बारे में, लेकिन of course मेरा वहां जाना हुआ. So thank you Renu Jain auntie who introduced me to Bade Mandir. Just a message, she's one elderly friend of mine who looked at my WhatsApp, sent me the location and told me जाओ बड़े मंदिर में और वहां जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी के दरबार में सरेंडर कर कर आओ. I spoke to my people, I have a son who's married, the elder one, my younger son, my husband was there, but I knew कि अगर मैं बोलूंगी तो कोई नहीं मानेगा because व्यक्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं रखता था. And I did not know anything about Guruji, whether he's in his, he's now like, he's not in the chola form, etc., etc. I just said, let's go for a long drive. We are going to Gurgaon. There's a Gurudwara there, and चल के मत्था टेक कर आते. Of course, everybody agreed because Ludhiana से हम काफी सालों तक रहे हैं वहां पर. So Gurudwara comes very naturally in our family, and Shabad and Ek Omkar and Satnam Vaheguru. So everybody agreed. Trust me, Sangatji, when I say the moment I entered, I had put my step in Bade Mandir. There was some kind of vibrations in my body. I started crying and I continued crying till the time I reached the Langar hall where we were served the Langar Prasad. मुझे नहीं पता थी उस लंगर प्रसाद की महिमा, मुझे नहीं पता था उस ब्यूटीफुल प्लेस का ऑरा क्या है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं रोई जा रही हूँ और मेरे शायद कर्म कट रहे हैं, क्यों, क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. एक खिंचाव जो पुरानी संगत जी बताती है ना कि गुरु जी को जब एक बार मिल लेते थे तो एक खिंचाव. Guruji used to draw the attention, used to attract, that was his aura. And the same thing happened to me. Starting from 2019, that trip to Bade Mandir, till this last visit of mine on 18th March, and to many more visits in future, there are miracles and miracles and miracles in my life. So, I will try to share a few Guruji's miracles. I don't know how many of you will get the message, but of course we have a time constraint. और मुझे चुप कराना actually बहुत मुश्किल हो जाता है because I've been a speaker and मुझे लगता है मैं बस share करती जाऊँ. So I'm so sorry. I'll take some more minutes to share miracles, I call them. COVID happened and my younger son was hit with COVID. हम सब बहुत परेशान थे. We being the elderly people, the parents and the human beings we are, कुछ नहीं पता था ऑक्सीमीटर के बारे में, कुछ नहीं पता था बीपी कैसे लेना है, and medicines, and हम खुद 50 plus के age group में हैं. The doctor, the message used to come, you have to take care of yourself because you are in a risk zone. As a mother, you know how it affects when your child is suffering from a problem which is like just pandemic बना हुआ था, जो इतना हल्ला मचा हुआ था और जिसका हमें क्योर ही नहीं पता था. I used to pray to Guruji. I did not get connected to Guruji, but वो शक्ति को मैं pray कर रही थी, Guruji को मैं pray कर रही थी, and the only prayer was, Guruji, I know आप कर्म काट रहे हो मेरे बेटे के, because मैं emotional journey से गुजर रही हूँ, लेकिन बस इतनी मेहर रखना कि hospital नहीं जाना पड़े. मैं कैसे manage करूँगी? अगर मैं बीमार पड़ गई तो उस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? And of course 20 days he was out with a negative report. This is wave first when we had. Of course I did the Shukrana Kirtan and the Shukrana Satsang, and I did not have any Swaroop in my house. One of my friends, thank you so much Vanna Gupta auntie, it was Ganpati Puja at my place because we come from Mumbai and I used to celebrate Ganpati ji. गणपति जी क्योंकि मूड थोड़ा ऊपर नीचे था तो बहुत छोटा सा एक आसन बनाकर गणपति जी को विराजमान किया था. And this one pendant that I'm wearing, if you can see this small, now though I have many in my hands, but this small pendant comes from Vanna auntie, who calls me and she says, Jyoti auntie, आपके लिए कुछ आया है. And I said, I'm so sorry, we are into COVID zone. I cannot come down to receive. Can you come up if it is okay with you?
though my son has come negative. So she said, yeah, of course I can come. She came and she said, apne haath aage karo. I did my hands like this and she gave me Guruji's pendant. Since 2019, this is there on my wristband and it is there as if Guruji is there with me, you know. Now though I feel Guruji is everywhere, but was starting. Slowly, I started getting connected. I was again affected when the second wave came and my son was affected. My elder son was again affected. My daughter-in-law was affected and she suffered from pneumonia. इतना हाहाकार मचा हुआ था कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे. Trust me, Sangat ji, my only place to bow down and to say my prayers was Guruji. Now the point is, as I said before, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था. तो जो miracle इससे पहले हुआ, this same place, I'm sitting at Agra at my brother's place. My bhabhi's friend, who's a wonderful Guruji's devotee, is a friend of mine too. She came that day, saw a bracelet in my hand, and she just asked me, Jyoti, you follow Guruji? I just smiled. शाम को एक पैकेट आता है मेरी भाभी के पास, शालिनी मेहरा, God bless her. Stella is my friend who sends the packet and she says घर जाकर खोलना. संगत जी, will you believe when I reached home, मुझे स्वरूप के बारे में, कौन सा स्वरूप, कहाँ गुरुजी के बड़ा मंदिर एक्सेट्रा नहीं पता था. मैं सिर्फ कनेक्ट हो रही थी गुरुजी से. When I went home, and of course it was a ritual to take bath because we were into COVID times, I opened the packet. There was this beautiful Guruji Swaroop which is there at my house in Greater Noida. There, the Guruji is sitting, you know, with his hand on his chin, and this is my favorite posture. When I looked at that Swaroop of Guruji, I immediately fell in love with him, you know. And he still talks to me. Every day's ritual is I look at the Swaroop and I speak to him everything. And his eyes conveys the message to me. You know, the way he smiles, the way he conveys the message. And from there, from the Swaroop that came to me, to the Swaroops in my house today, is a blessing that Guruji says that there I'm there. तू क्यों चिंता करती है? तो मुझे तो अपने गुरु की वडियाइयां करनी ही है ना, और मैं क्यों नहीं करूं. Coming to my mental, emotional health, जर्नी चल रही थी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि कुछ नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, हम हैंडल कर सकते हैं. एक्चुअली इमोशनल ब्रूजेस, माय डियर फ्रेंड्स, दिखते नहीं है. और हम जैसे लोग जो बहुत पॉजिटिव ऑरा में रहते हैं ना, वो हम ज्यादातर स्माइल लेके चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से थोड़े से टूटते हो, कभी ज्यादा टूटते हो, कभी कम टूटते हो. फिर आप हेजिटेट करते हो, किससे बात करें, करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. ट्रस्ट मी, किसी से बात मत करो, सिर्फ गुरुजी से बात करो. और जब आप गुरुजी से बात करोगे ना, तो गुरुजी आपको इतना स्ट्रांग बना देंगे कि आज मतलब वो डर निकल गया है, वो टेंशन खत्म हो गई है, और दुनिया इतनी खूबसूरत लगने लगी है कि बस ऐसे लगता है मैं कहीं भी जा सकती हूँ, किसी भी कोने में जा सकती हूँ इस दुनिया के. कुछ भी हो जाए मेरे साथ, लेकिन गुरुजी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे और वो मुझे ब्लेस करें, क्योंकि ऐसा ही हुआ. जब हम गुरुजी को मानते हैं ना, तो ऐसे नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं, जो मांग रहे हैं, बस सब कुछ अच्छा होता जाएगा. प्रॉब्लम्स तो लाइफ के पार्ट एंड पार्सल होते हैं ना, और वो आते हैं आपको टेस्ट करने के लिए कि आपकी श्रद्धा कितनी है, आपका विश्वास कितना है, आप कितना ट्रस्ट करते हैं अपने परमात्मा पर. और वही हुआ. तीनों बच्चों को जब कोविड हुआ और निमोनिया एंड हॉस्पिटल, आई डोंट नो कहाँ से शक्ति आई, आई डोंट नो कहाँ से वो लोग जुड़ गए, वन डॉक्टर आफ्टर द अनदर, of course the steroids, of course the medicine, and my अमृत वेला started. मुझे नहीं पता अमृत वेला की महिमा, लेकिन मैं अमृत वेला करने लगी. मैं सुबह, मेरी आंख खुल जाती थी, मैं गुरुजी के पास बैठ जाती थी, मैं वो जल प्रसाद रखती थी. फिर मुझे पता है, you know, today's children, if you say ये जल प्रसाद ये वो, because nobody in the family is still connected. They know their mom is into Guruji, but anyways, they don't ask me not to do what I'm doing, but then they don't believe it. I don't follow, I mean force them, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अगर परिवार का एक सदस्य भी मेरे साथ जुड़ गया है, तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ, और वो तो मेरे बच्चे हैं. So like that, Guruji's grandchildren actually. I'm crazy little, but that is how I relate myself. So I used to collect the jal prasads to go and give it to my daughter-in-law, to my son, to the younger one. कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी जाने की, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ी, और बच्चों को मेरे मालिक ने बिल्कुल स्वस्थ कर दिया. So that is again शुक्राना.
My son had lost a job, younger one, and he was into that depressive mode जो मैं बात कर रही हूँ. There are mental illness, but it's not depression. It's like हम क्या करें, answers नहीं मिलते, तो हम एक नया सा एक बड़ा फ्लैशी सा वर्ड आजकल सर्कुलेट होता है, ओ आई एम इनटू डिप्रेसिव मोड, ये डिप्रेशन हो गया है. इट्स मोर ऑफ बात करो एंड ट्रस्ट करो कि आज डिफिकल्ट फेज है तो कल ठीक भी हो जाएगा यार, ऐसे नहीं है कि चलता रहेगा. So I used to sit and talk to him and to tell him everything will be fine. But मैं मन ही मन गुरुजी को बहुत प्रे करती थी कि गुरुजी अच्छा बच्चा है ना, करोना है. मेरी अरदास आपसे है, दिल्ली जाएगा, गुड़गांव जाएगा, एक बैटल है, बिकॉज यू नो हाउ टू कम्यूट एक्सेट्रा. एंड कुछ ऐसे नहीं हो सकता. एक माँ की अरदास है कि अगर आसपास ही कहीं उसको कोई जॉब मिल जाए. आई नो इट्स डिफिकल्ट, आई नो बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं जॉब के लिए. किसी का जॉब छीन कर नहीं चाहिए मुझे मेरे बेटे के लिए, बस सिर्फ इतनी सी अरदास है कि अगर आसपास मिल जाए तो एज अ मदर आई विल बी लिटिल you know stationed and conditioned and satisfied. And it happened. The job actually came in his lap, कुछ 2 किलोमीटर दूरी पर, pick and drop, and he was like, he was ruling like a king, you know. He was so happy. He was very happy. Now suddenly after few months he wanted to study, and study at an age of 25, 26 is a question mark. Not as a question mark, but still, because colleges band hai, online classes chal rahi hain, he wanted to go for his post graduation. And my elder son, of course, wanted to migrate, and he got a promotion from his job where he was shifting to Belgium, Brussels. Now, as a mother, लोगों ने मुझे कहा तुम तो अकेली रह जाओगी, छोटा भी चला गया अगर तो. आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा, दुनिया बहुत खूबसूरत है और ये परमात्मा की ब्लेसिंग्स. हमें अपने बच्चों के साथ जो अम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्शन होता है ना, वो माँ का, जो डॉक्टर्स स्नैप करते हैं, कट करते हैं इन द हॉस्पिटल, वी टेंड टू कंटिन्यू with that umbilical cord for years and years and years. It should not be there. It should not be there. Let them fly like birds, you know. Let them go to their world. Let them feel happy and let them be connected with the souls to you as parents. You know, उनको अगर हम पकड़ कर बांध कर अपने साथ रखेंगे, and the space that is such a talked about concept these days, everybody needs space. Why are we restricting them not to fly in this beautiful sky and make their own journey and their memories and of course enjoy their moments? I did not stop. I said, okay, you can, because when he asked Mama, I said, of course, you go. Younger one who's wanting to study, he gave CAT exams, colleges shut down, online classes, and of course, coming from a middle class family, it was very difficult to spend 20, 25 lakh rupees only for online classes. He wanted to go to a college. Then I said, fine, CAT, you did. I mean, it's like maybe this is not happening. He did feel sad because of so much of money, you know, forms, etc., etc. But my belief in Guruji grew every single day. I just said it in a fluke. I said, why don't you want to go somewhere abroad and try some university? And he said, you know how much, like, you know, we are going to spend. I said, that's okay. There's education loan available. You can go for a scholarship if you will try, you know, at least try. He did try. And one step after the other, hurdles did come. I will not say everything was smooth, but then your trust has to be very, very strong on the Almighty and of course our Guruji. And yes, he did fly. He is in Melbourne, in Deakin University, going and taking care of his higher studies. So isn't it a shukrana, Guruji? Isn't it a gratitude to Guruji? My medical conditions suddenly got spoiled for no reasons. I don't know. It was holy, and I am on to my already to my menopause, and suddenly it was, oh, I was bleeding. I said, what is this? You know, and 22nd March, my birthday, is when Guruji's Satsang was planned at my place. He shook me up very badly. There is a reason. And of course, he called me to Bade Mandir 18 तारीख को. बड़ा सरप्राइजिंग लगा. होली वाला दिन मैं नीचे होली खेलने नहीं गई अपनी कम्युनिटी में, because I was going again, you know, mental stress we call depression. It was hardly depression, but it was the sad feeling. And I know आप कुछ तो कदम काट रहे हो मेरे ना, कुछ तो मुझे प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ तो स्ट्रेंथ दे रहे हो, but क्यों कर रहे हो? Was a, you know, natural question as a human being.
there is a call on my phone and I came to know that I'm supposed to go to Bade Mandir, and of course I went to Bade Mandir. मुझे इतना अच्छा लंगर प्रसाद मिला होली वाले दिन. Then उसके आगे त्रिगोली करके जगह है जहाँ पे Empire State का रेप्लिका बनाया हुआ है. I went there with the Guru Parivar. I was there and they said चलो हम वहाँ पे भी मत्था टेकते हैं ज्योति आंटी. ऐसे बिल्कुल चलेंगे. इतनी अच्छी होली सेलिब्रेट हुई वहाँ पे गुरुजी के दरबार में. वहाँ पे भी लंगर प्रसाद मिला. 19 को hospitals in, hospitals out, this MRI, that ultrasound, etc., etc. And a prediction from the doctor came that, oh, this is important to be done because we have to rule out that it is not malignant. Human beings do get scared. And the questions are, why me, why me, why me? So it was not why me, it was try me, Guruji. I'm not suspecting. I know there is a huge, huge problem that you are trying to evade from my life. He has beautiful friends around me, my dear friends. Such beautiful Guru Sangat, Guru Parivar around me. Like if I talk about Ayush Shankar, there are some beautiful souls in my life who have come very recently. And the way they love me, the way they give me the strength, the way they make me understand things is basically because Guruji's hukum is. They make me feel so comfortable. There's so much of warm affection that is showered on me. It is poured on me that I feel, oh God, I don't need anything else. And yes, my reports were absolutely normal. No malignancy. So it is again Shukrana Guruji Maharaj. अब दुनिया इतनी खूबसूरत है और हम फिर भी लड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने रिश्तों से लड़ रहे हैं, अपना पॉइंट प्रूव करने में लगे हैं. क्यों? जो मेंटल स्ट्रेस हम लेके चलते हैं, क्यों नहीं अपने आप को सरेंडर करते हैं? क्यों नहीं हम इस खूबसूरत सी दुनिया को एंजॉय करते हैं? क्यों नहीं हम अपनी प्रॉब्लम्स को उस परमात्मा के मंदिर में एक्चुअली सरेंडर करके शुक्राना करते हैं और वो मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं? I click lot of pictures whenever I go, wherever I go. Some people, of course, they tease me. My friends also tease me, but then later they appreciate when they see those pictures, because those are the moments I capture. I just hold those moments and keep them with myself to be cherished in the days of probably my solitude, when I'm all alone and I'm just browsing through those pictures. I feel an automatic smile coming on my face and I feel so happy, so happy. तो हमें दुनिया में एक्चुअली हमें चाहिए क्या? परमात्मा एक चींटी को भी खाना देता है, एक हाथी को भी खाना देता है. कौन सी मटेरियलिस्टिक दौड़ में हम भाग रहे हैं और अपने आप को परेशान कर रहे हैं? इतना सा पैसा, इतना सा पैसा, इतना सारा पैसा, हम अपने साथ में कुछ भी लेके जाने वाले नहीं है ना. और हम वो मोमेंट्स को क्रश्ड करते हैं, क्रम्पल्ड करते हैं. We are just running after मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा रिश्ता, मेरा ये सब कुछ यही रह जाता है ना. I'm 56 years old. I drive car on my own. People look up to me and say, driver rakh lo. I said, I enjoy driving 90 kilometers to and fro to my workplace. Music. ध्यान कौन रख रहा है? गुरुजी रख रहे हैं ना. I'm not flaunting. I'm telling you the reality. वो इतने सुकून के मोमेंट्स होते हैं ना, जब वो गाने चल रहे होते हैं या गुरुजी के शब्द चल रहे होते हैं. जब कुछ स्ट्रेस होता है दिमाग में, I connect to number 7, I was sharing it with my bhabhi today. और मुझे सडनली किसी गाड़ी की नंबर प्लेट में 777 दिख जाता है, which is like गुरुजी कहते हैं मैं साथ साथ हूँ, क्यों चिंता करती है कुड़िए? And the best is 777. The more I'm thinking about something, suddenly there's a flash, I see 777. Oh God, it's like Shukrana Guruji. So there's Guruji Sarup in my gadi. I just look at him and I smile and say, thank you so much. Or he answers through a song, I'm just thinking about someone special, probably my friend, somewhere, and suddenly ये गाना बज जाता है. और जब वो गाना बज जाता है तो उस गाने से मुझे मैसेजेस मिल जाते हैं. मेरी वाइब्स शायद उस फ्रेंड तक पहुंच जाती हैं, 100% पहुंच जाती हैं. And that happy aura. So when I enter my workplace, I am happy. If I'm happy, the team is happy. I'm not shouting and flustered and clustered and, like throwing out my frustrations. No.
I'm happy because Guruji is taking care, and he's taking care like a father. So, my dear friends, there is so much of beauty what I wanted to convey through my satsang. There is so much of pressure. There is so much of, you know, anticipation. We get into anticipatory mood. ऐसा होगा तो क्या होएगा? Hypothetical बातें करते हैं ना हम. हाइपोथेटिकल बातें करके कंक्लूड कर लेते हैं, अगर ये हुआ तो ये होगा, और वो हाइपोथेटिकल बातें हम ज्यादातर नेगेटिव करते हैं, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट, यू नो, ऐसा हो गया, ये गलत, ये सही. ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड नथिंग राइट. कुछ सही कुछ गलत नहीं है. दिल आपका साफ होना चाहिए. परमात्मा यहाँ बैठा है, और परमात्मा के साथ अगर हम मिलकर कुछ ड्रीम देखते हैं, परमात्मा के साथ जुड़कर अगर हम कुछ काम करते हैं, तो वो खूबसूरत क्यों नहीं होगा, और वो आपको खुशी देने के साथ साथ आपके आसपास लोगों को खुशी क्यों नहीं देगा. मैं आंख बंद करती हूँ और गुरुजी तथास्तु कह देते हैं. एक्चुअली दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कनेक्ट. नहीं कहते हैं तो मुझे मैसेज मिल जाता है, doesn't matter, I need to wait for some more time and this work will get accomplished, this work will get completed. So this is the beauty of being associated with Guruji. I listen to Guru Satsang every day. I listen to Shabads every day. Even if you are alone, you know, even if you are alone, you will not feel lonely. That is the beauty. और ऐसे जब आपको बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में हो, आपको लग रहा है अरे you are happy, but you might be lonely even in a group of people. Connect is of heart. I have some friends who are miles and miles and miles away from me, kilometers, oceans away from me. But there's a connect. And that connects keep me so happy, wishing for them, you know, praying for them, talking to them. फिर हम क्यों परेशान हैं? So, when Guruji says, बिन बोलिया मैं सब कुछ जानता हूँ, let's be happy about surrendering ourselves. Let's be happy about when Guruji says, ja ऐश कर. Let's be happy about with this beautiful song that Sonia Arora Aunty sings, शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा. So that shukar kara, Guruji tera shukar kara. Isn't it amazing? It is amazing. I would want to understand Ayush uncle because there are more satsangs, you know. Should I give Vishram to my satsang here and continue later, or you want me to continue? Hello. Ayush uncle. Jai Guruji, Aunty. Aunty, please continue. Please continue. Please carry on. How much time do I have? How much you have time about half an hour more. You can do that, yeah. I have half an hour. Thank you so much. Jai Guruji. Jai Guruji. Okay, so I'll tell you something. We were in Mumbai and Mumbai se Noida shift kara, Greater Noida. So I had this dream. Now this message here is, dreamers are achievers. And if you dream, you know, trust me, Ayush uncle, this is for you also. Dream, and dream larger than life, bigger than life. Then you start feeding your dream, you know, keep sending the vibrations to the dream with divine's blessing. What I do, I'm giving the trick today. I'm sharing the trick today. I pray to Guruji in the morning, not necessarily every day Amrit Vela, but probably, yes, it's almost every day Amrit Vela. I look at his Swaroop, I talk to him. My dream is very, very clearly etched out. I go out in the balcony, look up at the sky, the cosmos, the purity of the air around, and I surrender my dream with Guruji's blessings. I feed my dream and I believe into that affirmation leads to manifestations. And of course, your dreams turn into a reality if you believe into them, right? So when we shifted from Mumbai, I had this dream, this huge property, you know, the builders we stay with, the property of is God's, you know, they're huge people.
and just a dream that probably one fine day I'll be leading their school as a principal. You know, if I'll say सब जिससे बच्चे बात करते हैं ना, कुछ भी चांद तारों से रिलेटेड हम कहानियां सुनाते हैं, ग्रैंड मदर्स टेल्स होती हैं, कोई अगर मेरी बात उस वक्त सुनता तो एक्चुअली में हंसता, बिकॉज कोई जान नहीं पहचान नहीं, they are huge people, and how can I even have this thought in my mind to lead a school already established for so many years? I mean, they have a principal, why will they hire me as a principal in a school? But I don't know, the dream was there, and a very happy dream, and I had to keep nurturing the dream, feeding the dream, talking to, of course, Lord Shiva. So one fine day I decided to go and give my application. And of course, the principal was there. I met the CEO over there and he did interview me, etc., etc. So the school is coming probably in 2 years, another school, another vertical, and then we'll talk. 2 साल में स्कूल आएगा, कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, मुझसे कोई बात करेगा नहीं करेगा, there may be a better candidate, whatever. But I somehow liked the CEO so much. There was such a positive interaction between both of us that I believed him. And I smiled and said, okay, fine. 2 years, pretty long period of time, my dear friends. And it did happen that 2019 we shifted to Noida, and 2020 we all were under such a huge shock because of the pandemic. Where is my job? Will it happen? Not happen, because हम सब एक emotional journey से गुजर रहे हैं. Suddenly I get a call on my mobile, and it's like I received the call. It's a HR from the GuruJi's International School, and I was asked to come and meet the CEO. I was like, is it really happening? Because I really wanted to be there, but then the circumstances around were not very good. Anyways, I did go meet the gentleman once again, and was given assurance and did ask about me, what am I doing, etc. Now the time period for the school was not 2 years, it was just a year more to be waited for. But a year more to be waited for is like being a little crazy, because I was jobless. Of course, I came back. I joined another a reputed organization. Pandemic, it was shut down after some time. I remained home, and then one fine day I get a call to head the school as a principal of the founder principal of its new vertical. It was like, is it actually happening? I said yes. I mean, without a doubt. But the distance was pretty far, 45 kilometers one side, and then it was like, what am I going to do? Actually, jungle hai wo to. But jungle hai, Guruji wahi to aapko test kar rahe hain. I used to look at Guruji's Saroop and smile, and like, okay, you are giving me, serving my dream. But then, Sangatji, when I say this, I was standing on the podium and was addressing a huge gathering of 150 people that particular day, 2021, 31st March, for a parent orientation with a mic in my hand and talking to them about the vision, mission, goals, the parents, the educators, the energy level in me, which you can see now also, was escalating, I don't know to what level, because the happiness, again, the thing, this happiness and the gratitude, it was like, वो कहते हैं ना, पंख फैलाकर बस उड़ने का मन कर रहा था, और मैं उड़ी जा रही थी, कहाँ उड़े जा रही थी मुझे नहीं पता. Such a beautiful moment of my dream coming true, addressing the huge gathering. Okay, it was 150 people, but 150 was huge those days. From there till the 1st of April 2022, when I did address the parent orientation for the second consecutive year, the gathering reached to 300 people. I started with 15 children in the school. The challenge was great, but I was the principal. The GuruJi's, my dream project. And today, I am nearing 200 children very, very soon by GuruJi's meher. GuruJi's Saroop rests on my table in the school. There are bracelets to too many teachers where I share the Satsang with the teachers and they experience, GuruJi कहते थे संगत बढ़ाओ. संगत बढ़ाओ अपना experience share करके, सत्संग सुनाकर. And it is happening. People come to my school and they say, "Ma'am, the school में ना इतनी positive vibes आती हैं कि, they feel so happy about the place." Who is doing this? हम कुछ नहीं करते.
एक अहम में इंसान जीता है, एक मैं में इंसान जीता है। मैं ए करदा सी, मैं ओ करदा सी, मैंने ए किता, मैंने ओ किता, कुछ नहीं। वी आई थिंक वी आर द puppets in the hands of the Almighty. But He ensures that if your thoughts are clean, if your intentions are clean, if you're a good human being, He is there to take care of your journey. तो वो कहते हैं ना कि मैं कोशिश भी नहीं, अभी मैं सोच भी नहीं रहा हूं कि ये हो जाए और आप मेरी झोलियां भर देते हो, यू नो। अभी मैंने सोचा ही है और वो काम हो जाता है, तो वो काम कैसे हो जाएगा? Intentions, your heart. Jesus Christ used to say, a bad thought, a bad deed, and a bad, words. So thoughts, words, and deeds, right? If you have a bad thought, a sin is already committed. So Guruji हमारे मन को, हमारी नीयत को पहचानते हैं। अगर हमारा मन साफ है, हम किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो गुरुजी आपका साथ क्यों नहीं देंगे? वो आपकी लाइफ में मिरेकल्स, अगर हम मिरेकल्स कहते हैं, तो हम क्यों वो मिरेकल्स को एक्सपीरियंस नहीं करें? मेरे घर में एक फोन आता है स्टेला आंटी का, जो मेरे फ्रेंड है आज और बहुत स्ट्रॉन्ग गुरु संगत है। शी सेज गुरुजी का एक हुक्म हुआ है, एंड आई वाज डाइंग टू हैव अ गुरु सत्संग एट माय प्लेस, और मुझे कुछ नहीं पता था जब फर्स्ट टाइम सत्संग हुआ। इट वाज आल्सो अ डे प्रायर टू माय बर्थडे 2021 लास्ट ईयर। संगत ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, I didn't understand the meaning of hukum kya hua hai, etc. There's a driver who comes at a particular place, calls me, Jyoti aunty, मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, etc. etc. He comes home. This huge Guruji Suru comes to my house, and the gadi was driven from Agra till Greater Noida. My dear friends, we have speed breakers on the road. We have, the khaddas are there, and कुछ भी नहीं, वो सुरू बिल्कुल भी खंडित नहीं हुआ और सिर्फ एक दुपट्टे के साथ उसको रैप करा हुआ था। This huge Guruji Swarup stands at my place, rests on the wall with such a blissful smile on his face, and I was like, oh God, Guruji is there. And 21st March, I celebrated the satsang with a huge Guru Sangat in spite of COVID. Such a beautiful satsang happened 2021. And this year, 2022, 22nd March was my birthday. Again, with all these little problems, hospital, this and that, the satsang happened. And Guruji made his presence felt to so many people, so many Guru Sangat over there. Somebody was saying about the fragrance. Somebody was saying about the darshan, Guruji's darshan. Like I'd made a few days before I had a satsang at my place. I was all alone, myself. Just was sitting with Guruji, and I made halwa prasad. I can share pictures of Ayush uncle, and Ayush uncle can share with you all. I just made it, offered to Guruji, sat there, had 1 hour satsang to my own self, and was enjoying it, very happy. Sangaji, when I say this, trust me, I got up after the aarti and I took the aarti and I said Shukrana. The moment I picked up the bowl, there was a huge, very, very marked Trishul image, huge, strong Trishul, which was there on inside the bowl on the halwa prasad, the prasad. And you get so overwhelmed actually. आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा था वहां पे कोई गुरुजी का इंडिकेशन। वो स्ट्रॉन्ग गुरुजी का त्रिशूल कैसे बन जाता है हलवा प्रसाद में, इज बिकॉज ऑफ मेरे मालिक की मेहर। ये बताने के लिए हम उनसे इंडिकेशंस मांगते हैं ना। मैंने बहुत सारे संगत से ये भी सुना है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, गुरुजी कोई साइन दिखा दो ना प्लीज, कुछ तो बता दो ना। जैसे मैंने नंबर 7 का बताया, ऐसे ही व्हाइट बर्ड्स का बहुत है। आई विल सी सडनली अ व्हाइट बर्ड, आई विल सडनली सी अ पीकॉक्स वॉइस एंड आई फील सो हैप्पी। ऐसे हाँ जी मुझे मिल गई। कोई मंदिर की घंटी सुनाई दे जाती है मुझे, मेरे मोबाइल पे ही नोटिफिकेशन की घंटी आ जाती है। आई एम दैट क्रेजी इनटू इट एंड ऐसे हाँ मुझे पता चल गया आप हाँ जी बोल रहे हो, आप यस बोल रहे हो, आप बोले जा ऐश कर। That is the beauty of my Guruji, because I'm not talking about मैं, but मैं सिर्फ आपसे thought share कर रही हूँ. I don't wish bad to anybody.
I'm like, okay, आप ठीक हो, fine, you're right, whatever. I don't get into a useless argument. I don't say anything. इसके साथ ये हो जाए, इसके साथ वो हो जाए. It's like, be happy, be healthy, just. And myself, it's like, I will just pray to him. I will just give my blessings as much as I can. Is it possible? I continue doing that. So isn't Guruji magical? है ना? मतलब ये हमारे गुरुजी का ऑरा है. गुरुजी कहते हैं पर्सनल कनेक्ट बनाओ. वो फूलों की लड़ियां, वो बड़े बड़े दरबार, that big show off the pomp and grandeur you try to create and you say गुरुजी तो मेरे हैं. ऐसे नहीं है. आप साथ में बैठकर छोटा सा हलवा प्रसाद का बोल लेके आप कनेक्ट करोगे और गुरुजी बोलेंगे bless you baby. That's the fact, that is how he gets connected. Because some people connect Guruji as a friend, some people connect Guruji as a father. I always used to worship Lord Shiva also as father, as to look up, he's my father. And likewise, Gurupa, I call him Gurupa. और मैं बहुत जिद करती हूँ, मैं बहुत झगड़ा करती हूँ. झगड़ा नहीं करती, बोलती गुरुजी how deeply I want this, this now, please गुरुजी, आपको पता है ना. और मुझे रोना आता है तो मैं रो भी जाती हूँ. And then I hug him, and say गुरुजी प्लीज, आपसे नहीं जिद करूंगी तो किससे जिद करूंगी. So here I want to convey a message to the people, my friends. कहते हैं गुरुजी कहते थे मंगो मत मन्नो. I say the other side. Of course, मंगो मत मन्नो, fine, but हम गुरुजी से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? वो मेरे गुरु पा है. मैं अगर अपने पापा से नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? The only difference that I've understood in my life is जिद मत करो. जब जिद कर किसी चीज के पीछे जाते हो, मुझे चाहिए, तो इट्स लाइक हमें आगे का नहीं पता ना. Probably that is not good for us, or probably the time is not right when हम जिद कर रहे हैं. मैं तो बहुत मांगती हूँ, बहुत कुछ मांगती हूँ, and वो सब कुछ देते हैं. That is the beautiful part, my dear friends. I just say I want this, and it happens. But at times I have to have patience to understand that if it is not happening now, probably this is not the right time. But that doesn't mean कि वो नहीं होगा. मतलब I have a friend, not near around me. तो कभी अगर मुझे ऐसा होता है ना, यार मेरे बहुत मन कर रहा है, गुरुजी बात करा दो ना, प्लीज बात करा दो. And the moment I just say, वो नाम पॉप अप हो जाता है, वो बेल बज जाती है और फोन आ जाता है. And then I have to tell the friend, ऐसे बहुत लंबी उम्र है, अभी मैं गुरुजी से बोल रही थी. And then comes the laughter, and then comes like फोन के लिए भी गुरुजी से बोला जाता है. तो मतलब it's like that is the connect, because my feelings are so strong और my belief is so strong कि नहीं यार, मतलब अच्छा बुरा सही गलत, it's गुरुजी. Plus that na shukrana mode, it should not be there. You should be in so much of gratitude and so much of love and affection that Guruji says tathastu. Now, before I proceed further, as I said, I'm here at my brother's place, and आप एक magic देख रहे हैं गुरुजी का. तो मैंने बोला ना शालिनी मेहरा, तो आप I want Shalini to just come and say hello and Jai Guruji to all of you, Sangat ji. She Guruji, Sangat ji, Shalini Mehra. Bless her. She's a wonderful soul. और गुरुजी ने एक और मैजिक करा है, मैं दिखाऊं आपको अभी. तो वो मैजिक आ रहा है क्योंकि मैं आपसे सत्संग के शुरू से बोल रही हूँ स्टेला के बारे में. आप मान सकते हैं ये ड्रीम्स. जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी. Stella, and she is like, she's taken my heart actually. तो गुरुजी क्यों नहीं ब्लेस करते हैं, आप मानते हो ना संगत जी? That is the strength of belief, वो सुनते हैं, वो हर वक्त सुनते हैं, बट हम नाशुक्र हो जाते हैं. हम क्यों नहीं उनका शुक्राना करें? छोटी छोटी चीजें है ना, मैं स्टेला को नहीं मिल पा रही थी. Some reasons I was occupied. I was just praying कि ठीक है शाम को मिल लेंगे, however. और वो सत्संग के टाइम पर she has arrived here. So can you understand the happy moments जो हम अभी सत्संग को विश्राम करने के बाद गुरुजी ब्लेस करेंगे? तो आयुष अंकल, are you in there? Yes, Aunty, yes. Ayush uncle, I really want to say something on this platform. You told me to send my blessings to you. You told me a few things. Can you see this happiness on my face, which is not at all artificial? I am smiling bright. Trust me, your dreams, your prayers will be answered
very, very soon with a lot of positivity in your life, Ayush Uncle. And my blessings and my prayers and my love for you will always be there. Guruji Thank you will so much. very soon. You never know. As I said before, probably I might be coming to UAE. Probably. I don't know. But I am making this announcement because I feel very strong vibes. And who knows, I will be actually conducting satsangs with you, sharing satsangs with, again, it's a huge dream. Yeah. But I believe into that. It will happen. So keep trusting Guruji, keep praying to Guruji, keep believing into him, my dear friends. He is one magical soul, but then he says, direct connection banao. And he says, मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, बाकी तो सब भीड़ है. You know, जब हम हर्ड मेंटालिटी के साथ देखा देखी में हम एक किसी चीज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, that is wrong. Whichever God you follow, Guruji says, you know, that's Ek Omkar. God is in one form. God is formless, actually. You believe into that Shakti, you believe into that power, but then you surrender yourself. And you trust and you wait because things will happen. And I say, mango, bilkul mango. But Guruji ki meher ke saath, Guruji ki blessings ke saath, Guruji ki shukrana ke saath. Probably few more months, days, whenever Guruji will give me the hukum, I will share that emotional journey of mine. Today, I don't think it's the right time, you know, because I am in a very happy mode. But the mental journey, what I was talking about, many people do not talk. It's absolutely normal. Not necessarily that you need to see a counselor, you have to go to a psychiatrist. It's normal. Talk to Guruji. Talk to your friend and get yourself cured. I got myself cured without visiting a counselor. I got myself cured just by talking to Guruji. And today I'm like, the child Guruji, बच्चे थोड़े इतराते हैं ना, मेरा Guruji डांटा, when he says फिर डरने की क्या बात है, I have the back, I have the support. तो मतलब वो इतराने का मन करता है, वो मटकने का मन करता है, वो खिलखिला के हंसने का मन करता है, और ऐसे लगता है जीत जाएंगे हम. Not in the wrong sense, not harming anybody, not, wishing bad for anybody, but of course, so keep feeding to yourself. I'm a beautiful soul. Smile, trust him, surrender to him, and be into that Shukrana mode. Thank you so much for giving me this platform. How much time do I have further, Ayush Uncle? Aunty, please take 10-15 minutes. Don't worry about time. No, it's that, everybody. Okay, yeah, fine. So, so the next comes this dream, huge dream gets fulfilled, which is, being the principal, the founder principal of God's International School, which was, just a dream I thought about. When I was in Mumbai, very interesting. I'm going to share all happy shukranas today. My personal journey, as I said, the emotional things will probably some other time. I am one person who have been a lot of stage person, right? I keep seeing your dances and your songs, Ayush Uncle. So trust me, this is somewhere, I think, for you. When I shifted to Mumbai, of course, we did not know anybody there. 2015, and I was some 40 plus. So ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं बहुत young or I'm somebody very good looking, etc. But I had this desire to be there in television, to maybe, but again, a wild dream. I'm talking about dreams, and dreamers are achievers. I just discussed it with one of my friend. I eventually got knowing somebody and said, अच्छा ऐसा है ज्योति जी, ठीक है, मैं आपको एक कोऑर्डिनेटर का नंबर देता हूँ और आप जाकर बात कर लीजिए. The coordinator is one big shot in Mumbai, and she's like one huge person. Of course, I went and I met, and she just, scanned me. However, unka eyes mein scanner laga hota hai. And she was like, good, Jyoti, okay. So whatever formalities done, form fill, ye wo sab ho gaya. One fine day, I get a call without any audition. I did give a few auditions in between, but I was not selected. So I was like rejected, and I had to take that rejection
कि भाई कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, बट ऐसा कुछ करा वरा नहीं मैंने. I was just going to the flow at my prayers and my prayers, Shankar Bhagwan ji, like Shivji, I used to pray. One fine day I get a call and she said, Jyoti, you're selected. There's a Vodafone ad happening and DY Patil Stadium. There's a pickup, there's a drop, and it's a night shoot, etc. etc. मतलब गुरुजी जब करते हैं ना तो वो ऐसे करते हैं, ऐसे 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 करते हैं कि you are just left baffled, you know, कि suddenly सब कुछ हो गया और आप खुश तो होते ही हो. I got my personal vanity van. I was there at DY Patil Stadium shooting for Vodafone ad. Oh my God, that was a moment. From there till so many advertisements I have done in my life. कैसे आ गए मुझे नहीं पता. I am not the star. I am not an artist per se. I don't go to the gym. I'm not taking care of my skin, my hair, how these people get into, which is their profession. But Guruji blessed me because my dream, it was such a real dream which I wanted to pursue, and it used to give me happiness. Important thing is it used to give me happiness. Another wildest dream when I started going to this, you know, these auditions and getting selected and to see myself on television. अब मतलब ड्रीम्स की तो लिमिट नहीं होती ना, फिर मेरी ड्रीम्स की तो बिल्कुल कोई लिमिट नहीं होती है. तो बस एक बैठे बैठे सोच रही थी, गुरुजी वो जो स्टेज के ऊपर अवार्ड शोज होते हैं ना, अंडरस्टैंड द वाइल्डनेस ऑफ माय ड्रीम. स्टेज के ऊपर अवार्ड शोज होते हैं ना, तो मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं किसी को अवार्ड, मैं हूँ क्या? I mean, I'm an educator. I'm a simple middle class normal plain Jade. I'm not, as I said, beautiful or somebody जिसके बड़े contacts etc. But dream. I started nurturing the dream. Trust me, is there on YouTube. So I'm not, of course, just, you know, बस कुछ भी बोल रही हूँ मैं यहाँ पर. I'm saying it a responsibility. On during the Ganpati, so Ganpati ka time tha, mere paas ek phone call aata hai from Z Studios, and it is like, hi, this is Jyoti. I said yes. So can you come for an audition? I said, I'm so sorry, this Ganpati there at my place, and I can come only after the Visarjan. And but why is this phone call? What is this phone call for? So it is like we are celebrating 25 years of ZTV. And we want the fans, you know. So you're one person who's been selected. So I said, how did you get my name? Where did you get my picture from, etc. Then I came to know that they have the contacts, you know, different casting directors, etc., etc., etc. So my clip or video, whatever they had got, and they just finalized, not finalized. It was like some 5 to 10 people, and I was one of them. As okay, they said connect करो campus के days से, अपने school days के, अपने college days से कुछ करके audition करना है. Like, fine, I can do it only after the Ganpati Visarjan because right now I'm in the spiritual mood. I can't get into this. They agreed. Of course, I went for the audition. Sangat ji, right now, if I think about it, I'm getting goosebumps. This huge stage. Me on the stage giving awards to 2 people. When my name was called out, you know, Jyoti, Mera, Kacker from Agra, the fan moment. I was the first one. Ritvik and Ravi Dubey were the host. Ekta Kapoor and the TV industry was sitting there. I mean, just TV mein dekhte hain, the artist and all. And my seat was also reserved, you know, आगे. वो जो moment था ना, वो moment था, जिसे कहते हैं ना, बस यहीं पे रुक जाए और सांसें रुक जाए और वो complete हो जाए. क्योंकि आपने सिर्फ एक dream देखा था. वो dream up live, you know, you were living the moments, and I was given 20 minutes to speak. Matlab 20 minutes on the stage in front of the dignitaries and the big shots of the industry, TV industry. Isn't it a shukrana to the Almighty and of course to Guruji? And I was like, मैंने कहा ना, फिर इतराने का मन करता है, very humbly, but वो possible हुआ. उसके बाद थोड़ी सी आपको लालच आ जाती है, या you know, you get that ललक, that looking forward कि और कुछ चाहिए. जैसे मुझे आयुष अंकल के इस प्लेटफॉर्म पर एक ड्रीम था. सडनली वो ड्रीम मेरी झोली में आ गया, तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी. तो अब ड्रीम बढ़ा कोई स्टार्स को लेकर. Optimistic is a big production house. एक दिन कॉल आता है, and it's like, you know, come, we are coming up with a game show, etc., etc. Game show, I did go there, and I'm nuts, you know, like I can't get into mathematics and logical calculations, etc., etc. Anyways, audition वगैरह हुआ with my elder son because they had to pick 2 people from the family.
And finally, I was there on Sabse Smart Con Star Plus with Alia Bhatt and Varun Dhawan. And you know those moments, those memories now, as I say, the pictures and the videos and the memories are so important because you cherish them in your moments of solitude or when your energy for some reason gets drained out. You know, हम इंसान हैं, हो जाता है. लेकिन जब आप वो अच्छे moments याद करते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है कि यार परमात्मा है ना साथ में. हम क्यों दुखी होते हैं वेरी रेकरेंटली, क्यों परेशान हो जाते हैं. मत होइए संगत जी, the world is so beautiful. Please, as I said, today is the Shukrana Satsang, so I'm not going to go in sad thing. ऐसे बीमारी हुई, ये हुआ. Of course, I do have those to share, but some other time, because this happiness, I think, should be shared. It multiplies. जितनी खुशियां आप अपनों के साथ शेयर करेंगे, अपने आसपास शेयर करेंगे, आपकी खुशियां उतनी मल्टीप्लाई होती हैं. ऐसे कहा जाता है, मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल. माय फेसबुक पेज इज फुल ऑफ ऑल एवरी पॉजिटिविटी एवरी सिंगल डे. लोग मुझे पूछते हैं तुम इतनी खुश कैसे रह लेती हो. What is the reason? I mean, the reason is the power, the Almighty, who makes me understand. आज दुख है, कल नहीं होगा. वो कहते हैं ना, मैं रोऊं या उदास हूं तो कोई खबर भी नहीं पूछता. That's a fact. When you cry alone. So if you are udas, if you are sad, कोई खबर भी नहीं पूछता. और जरा सा मुस्कुरा दूं तो लोग वजह पूछते हैं. And if you are happy, everybody gets those churnings in their stomach, which is like, क्या बात है, ये तो बहुत खुश है, क्या बात है, ये इतनी खुश कैसे रह लेती है. लेकिन परमात्मा क्या चाहते हैं? वो नहीं चाहते ना कि उनके बच्चे दुखी रहे, वो नहीं चाहते ना कि उनके बच्चे परेशान रहें. हम भी तो माँ बाप है ना, हम नहीं चाहते ना हमारे बच्चे दुखी रहे या परेशान रहे. ऐसे वो परमात्मा भी नहीं चाहते ना. गुरुजी चाहते हैं उनकी संगत खूब खूब खुश रहे. एंड खुश रहने के साथ खुशियां बांटे, डिस्ट्रीब्यूट करे, आसपास वो ऑरा बना के चले. सब ठीक है, और अगर ठीक नहीं भी है तो ठीक हो जाएगा. नॉट अ बिग डील एट ऑल. I love you, each one of you, so much. I'm just able to connect to your souls. I hardly know anybody's face. I hardly know any name. I just know Ayush uncle, but I don't know. I feel as if I am connected to so many of you, and I hope I'm able to at least pass this message today. Happiness is important, and your dreams are important. Your shukranas are important, your gratitude is important, and Guruji is one magical aura around. Love him, love yourself, and spread happiness. So I think, Ayush uncle, I would really want to take Vishram because मेरी journey को चुप कराना ना बहुत मुश्किल है, actually बहुत मुश्किल है. And of course, I look forward to the platform next time to share for the snapshots from my life. And it is immense blessing today that I am able to speak with so much of energy and so much of happiness. Indeed, I'm blessed. Indeed, I'm blessed. Thank you so much. Thank you. It means a lot to me. Can I actually rest my satsang to Vishram now? Yeah. Thank you so much, Aunty. Shukrana for spreading and instilling that happiness and confidence in us and the positivity that your words have put in me. And I'm sure a lot of Sangat, so many people are asking me your recording, so many people are asking me your number. And I don't know, as you said, happiness spreads. So it's already spreading. It's already, Guruji has taken your happiness and instilled it in people, literally. Shukrana Guruji, Shukrana Guruji. आप ही ज्योति आंटी को उस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हो. You connected her dream to what is happening today. So it's all his grace. Everything is his grace. I can see a few hands raised. Jyotsna auntie is raising a hand. There's a Jyoti Gupta, I believe, raising a. Can they be allowed to ask? Ayush uncle? Yeah. I'll unmute them. Yeah.
जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना। हाँ जी आंटी। आंटी मेरा नाम भी ज्योति है और गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी ने ये प्लेटफॉर्म मुझको भी बिना फोन नंबर और बिना एड्रेस किसी मतलब कुछ भी मेरे पास नहीं था, और गुरु जी ने ये आयुष अंकल के थ्रू मेरे पास मतलब पहुंचाया। आयुष अंकल का मतलब मैंने सिर्फ एक यूट्यूब देखा था, और आयुष अंकल मैं किसी ग्रुप में जुड़ती हूँ और मैं एक फेसबुक से लिंक आता है बड़े मंदिर का, और आयुष अंकल का सबसे पहला सत्संग बड़े मंदिर का मैंने सुना। सेकंड में जिस ग्रुप में जुड़ती हूँ तो आयुष अंकल का मतलब किसी और ने किसी प्लेटफॉर्म का मतलब गुरुजी की तरफ से ये लिंक आया, और मैं चाहती थी आयुष अंकल का सत्संग सुन के कि मैं आयुष अंकल के घर पर जाऊं या आयुष अंकल का घर का दरबार देखूं या सत्संग वहां पे मतलब मुझे बुला ले, या आयुष अंकल मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ दें। और देखो गुरुजी की कृपा कि गुरुजी ने फर्स्ट सत्संग भी उनका सुनाया और फर्स्ट जूम का जो मुझे लिंक भेजा वो भी आयुष अंकल के दरबार का। कितना शुक्राना करे, कितना शुक्राना करे उतना कम है ना। आयुष अंकल के दरबार का और 2 ज्योति नाम के सोल्स को इकट्ठा मिलवा दिया। हाँ जी कितना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना ज्योति आंटी। गॉड ब्लेस। गुरु जी के चरणों में 2 लाइनें बोलूंगी जी। एक तो एक नवरात्रि है, 2 लाइनें माता की और 2 लाइनें गुरु जी की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात परमेश्वर है। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। मात मेरी आ जाओ, रंग बरसाने आज, मात मेरी आ जाओ, रंग बरसाने आज। मन की मन में रह गई मैया देख के मुखड़ा तेरा, मन की मन में रह गई मैया देख के मुखड़ा तेरा। कहूंगी तुमसे दिल की बातें, दुखड़ा होगा थोड़ा, कहूंगी तुमसे दिल की बातें, दुखड़ा होगा थोड़ा। जान गई मैया बिन बोले मेरे मन के राज, मात मेरी आ जाओ, रंग बरसाने आज, मात मेरी आ जाओ, रंग बरसाने आज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और ज्योति आंटी बहुत आपके सत्संग से जवाब मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबका भला करना, सबके घर में खुशियां, सबके घर में खुशियां देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू so much Jyoti aunty. Thanks a lot for your time and we'll call you again soon because this wasn't enough. So शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आयुष अंकल वेरी सून, कीप योर फिंगर्स क्रॉस। आई एम टेलिंग यू द नेक्स्ट ड्रीम। हालांकि गुरु जी कहते हैं ब्लेसिंग्स जब मिल जाती है ना उसके बाद बोलना चाहिए, पर हम सब गुरु संगत बैठे हैं, गुरु परिवार बैठे हैं, तो हम सबकी जो डिविनिटी पावर्स हैं, जो सोल की पावर्स हैं, वो बहुत प्योर है। So I'm again making a loud shout out for my next dream that I'm coming to UAE very, very soon. And we're looking forward to having you. Looking forward. Jai Guru Ji. Jai Guru Ji. Thank you so much, Sangat Ji. God bless you. Guru Ji bless you. Thank you so much. Thank you. Bless you too, Aunty. Jai Guru. Jai Guru. Thank you. जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत ही बढ़िया सत्संग था आज का ज्योति आंटी का। गुरु जी उनको भी ब्लेस करें और बाकी संगत को भी ब्लेस करें जो इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई है ऑनलाइन। संगत जी अगर किसी को अपना सत्संग शेयर करना है, शॉर्ट सत्संग, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और रेशमा खन्ना आंटी आपका माइक अनम्यूट कर रहे हैं, आप अपना सत्संग शेयर करते हैं, आपका हैंड रेज था।
हेलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। Giving us this platform. Thank you very much, Samar uncle, Ayush uncle. Thank you very much. Beautiful satsang by Jyoti aunty. God bless everyone. Guruji bless everyone. आज माता रानी का बहुत बड़ा दिन है, अष्टमी है, तो आज माता रानी, गुरुजी सबको शुक्राना करना है मुझे। एक आधा भजन माता रानी का, आधा भजन गुरुजी का गाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। अपनी मैया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपनी मैया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपनी मैया की मैं तो बनी रे जोगनिया। मैया जी के नाम की माला मैं बनाऊंगी, मैया जी के नाम की माला मैं बनाऊंगी, दिन हो या रात हो रटन मैं लगाऊंगी, बातें बनाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, शेरा वाली की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया। आएगी मैया जब मैं तो बल बल जाऊंगी, आएगी मैया जब मैं तो बल बल जाऊंगी, पूजूंगी अम्बे को मैं तो शीश नवाऊंगी, रंग में मैया के रंग लो सारी चुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, रंग में मैया के रंग लो सारी चुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपनी मैया की मैं तो बनी रे जोगनिया। मैंने कहा दुनिया से संग मेरे आओ जी, मैंने कहा दुनिया से संग मेरे आओ जी, आके मेरी मैया जी के दर्शन पाओ जी, दर्शन दीवानी हो गई सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, मैया के रंग में रंग गई सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपनी मैया की मैं तो बनी रे जोगनिया, शेरा वाली की मैं तो बनी रे जोगनिया। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। समर जी एक छोटा सा भजन, छोटा सा, और साईं बाबा और मैया गा लूं। जी जी आंटी। जय जय साईं राम। साईं नाथ हो मैया साथ हो, साईं नाथ हो गुरुजी साथ हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो साईं नाथ हो गुरुजी साथ हो, साईं नाथ हो गुरुजी साथ हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो। मेरे गुरुवर की ये है निशानी, चांद सा मुखड़ा आंखें नुरानी, मेरे गुरुवर की ये है निशानी, चांद सा मुखड़ा आंखें नुरानी, दुनिया दीवानी, साईं नाथ हो मैया साथ हो, साईं नाथ हो गुरुजी साथ हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो। ओ मेरे गुरुवर भूल न जाना, तेरे चरणों में है मेरा ठिकाना, ओ मेरी मैया भूल न जाना, तेरे चरणों में है मेरा ठिकाना,
अब ना रुलाना साईं नाथ हो, गुरु जी साथ हो, साईं नाथ हो, गुरु जी साथ हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो। जब से गुरु ने अपना बनाया, छू न सका कोई गम का साया। जब से मैया ने अपना बनाया, छू न सका कोई गम का साया। मन मुस्काया साईं नाथ हो, गुरु जी साथ हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो। मैं अपना सब भूल के साईं शरण तेरी लेने को आई। मैं अपना सब भूल के साईं शरण तेरी लेने को आई। तुम हो सहाय साईं नाथ हो, गुरु जी साथ हो, साईं नाथ हो, मैया साथ हो, इन तीनों को मेरा प्रणाम हो, इन तीनों को मेरा प्रणाम हो। जय साईं राम, जय गुरु जी, जय माता रानी को, सभी को लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। थैंक यू वेरी मच संबर अंकल, थैंक यू आयुष, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, मे बाबा ब्लेस यू ईच एंड एवरीवन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही बढ़िया भजन रेशमा आंटी का और ज्योति का आंटी का। और इसके साथ ही हम आज के सत्संग की समाप्ति करेंगे, और उससे पहले एक छोटा सा शुक्राना भजन, और उसके बाद सबका माइक अनम्यूट करेंगे और हम लोग शुक्राना करेंगे। उससे पहले एक शुक्राना। और आज के सत्संग के लिए आप सभी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो
है तेरी दाता, अच्छा ही हो रहा है। मर्जी है तेरी दाता, अच्छा ही हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। सबका माइक अनम्यूट कर रहे हैं, एक एक करके सब आज्ञा लेंगे। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना सबकी गुरुजी। मनोकामनाएं पूरी करे, सबके दुख दर्द दूर करे। जय जय गुरु जी। वाह वाह जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।